Hello students, now in the statistics we are learning correlation. In that we have learned two formulas of Karl Pearson's, that is this one, that is x minus x bars formula and sigma xy formula, right? So Karl Pearson has three formulas that we have already seen. So now we will go for the third formula. The name of the third formula is called shortcut formula also. शॉर्टकट फार्मूला क्यों? बिकॉज इसमें वर्किंग बहुत शॉर्ट हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट फार्मूला, नथिंग एल्स इन दैट. लेट्स टेक सम नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द एज एंड ब्लड प्रेशर, find the correlation coefficient between age and blood pressure. Now when we apply that third formula is of UV formula. Now we have already seen that we apply that formula when data is given in large numbers see these 3 digits data. अगर इसमें हम XY वाली मेथड करेंगे तो वर्किंग कितना लार्ज हो जाएगा, right? So to minimize and to make shorter that working, we apply that shortcut formula, right? So sum number 7 में we apply shortcut formula because, so first of all let's write down basic working of this sum. Basic working means table बना देते हैं. In that we write down this first row is called x, second row is called y, x and y we write down, then we find out x bar and y bar. So basic I have written, see I have prepared a table. First of all see the formula, that n sigma uv minus sigma u into sigma v upon square root of n sigma uv square sigma u square n sigma v square minus sigma v whole square. We prepare this table according to the formula. uv है तो ये uv, sigma u sigma v तो ये दो, फिर sigma u square ये u square, sigma v square तो ये v square, right? Now main is this in this sum, right, that we convert. ये x and y जैसा ही है, we have converted x and y into u and v, right? Now u is equals to x minus a upon c x. Now first of all here a and here b both are called as assumed mean, right? Assumed mean. तो इसमें a and b में हम assumed mean की वैल्यू ले लें. एंड व्हाट अबाउट दिस सी एक्स एंड सी वाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं लिख दूँ दैट a इज इक्वल्स टू, ये मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू क्या, ये एज्यूम a 58, राइट? तो एग्जैक्ट हम 58 ही ले लें. एंड दिस इज, यहाँ पे b एज्यूम करना है, राइट? b में हम एज्यूम करेंगे b कितना है 144.125. 144.125 दैट मीन्स व्हाट, कि वी डू नॉट टेक दिस वैल्यू, ये डिजिट में हम, ये जो पॉइंट है डेसिमल वैल्यू में हम नहीं लेंगे, वर्किंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. दिस इज शॉर्टकट मेथड. वी हैव टू मेक अवर वर्किंग शॉर्टर एंड ईजियर. सो वी कैन नॉट टेक दिस 144.125. we take nearer value of 144.125. so let's take 150. this is our assumed value, right? तो हम b की जगह पे यहाँ पे 150 लिखेंगे. y मीन्स व्हाट, कि ये वैल्यू, ये y. नाउ दिस लेफ्ट सी एक्स एंड सी वाई में क्या लेंगे. बट बिफोर दैट यहाँ पे एज्यूम वैल्यू में कोई लोग, ये फॉर एग्जांपल ये x माइनस ए है तो इसमें से कोई भी स्मॉलर वैल्यू भी एज्यूम कर सकते. इफ़ यू डू नॉट वांट टू एज्यूम दिस वैल्यू, यू कैन एज्यूम फ्रॉम दिस वैल्यूज़ ऑल्सो. इसमें से कोई भी स्मॉलर वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल 52 भी आप एज्यूम कर सकते हैं, राइट? या फिर मीन को भी नियरर वैल्यू से एज्यूम कर सकते हैं. ये एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए हमने 58 लिया, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसलिए हमने नियरर वैल्यू लिया. आप कुछ भी एज्यूम करें, 50 इसमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम करें, स्मॉलर वैल्यू एज्यूम करें, मीन एज्यूम करें, कुछ भी एज्यूम करें, राइट? योर आंसर कम्स सेम. Your answer does not change if you assume any of the value. Are you understanding?
राइट. सो डू नॉट बॉदर अबाउट द एजम्पशन, जस्ट रिमेंबर अगर कुछ भी पता नहीं चलता है तो ये मीन ही एज्यूम कर लो. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि मीन की जो वैल्यू है अगर डेसिमल वैल्यू है तो नियरर वैल्यू एज्यूम कर लो. राइट. तो ए एंड बी में हो गया. व्हाट अबाउट दिस सी एक्स एंड सी वाई. सी एक्स एंड सी वाई में अगर कुछ भी पता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक कि वट एवर सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सी एक्स ले. राइट. इसमें जो कॉमन डिविजिबल निकलेगा, कॉमन डिविजिबल जो निकले दैट इज़ अवर सी एक्स. वाई में भी कॉमन डिविजिबल जो भी निकले दैट इज़ अवर सी एक्स. राइट. अभी इसमें कॉमन डिविजिबल कुछ भी नहीं निकलता. वाई भी देखे डेटा, एक तो ये ज़ीरो है तो डिविजिबल बाय 10 समझे, ये ज़ीरो है डिविजिबल बाय 10 समझे. बट दिस व्हाट अबाउट दिस 158 एंड 1 for this 158 and 155 that is not divisible by 10. राइट. इसमें तो डिविजिबल बाय 10 होगा ही नहीं. सो हियर इन डिविजिबल, कॉमन डिविजिबल शुड बी अप्लाई टू ईच एंड एवरी डेटा. राइट. तो यहाँ पे 10 डिविजिबल नहीं होगा तो क्या करें, तो वी एज्यूम सी वाई एज 1, सी वाई एज 1. 1 तो कॉमन ही है, 1 से तो सारे कुछ डिविजिबल ही हो जाएंगे. एंड यहाँ भी देखें सी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ के डेटा में कॉमन डिविजिबल 1 निकलेगा. सो सी एक्स इज इक्वल्स टू 1. राइट. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सी एक्स एंड सी वाई 1 ही ले ले. दैट्स व्हाट आई एम सजेस्ट कि 1 ले ले, सो दैट इज़ बेटर. राइट. ओके. तो ये हो गया. नाउ वी फाइंड आउट, नाउ वी स्टार्ट वर्किंग. पहले ये x माइनस ए अपॉन सी एक्स, एक्स मीन्स दिस वैल्यू, तो 58 माइनस 58 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 कम्स 0. 58 माइनस 58 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 कम्स 0. राइट. ओके. आगे ये 55 माइनस 58 अपॉन 1, तो -3 आएगा. राइट. देन ये 65 माइनस 58 अपॉन 1 कम्स 7. इस तरह से ये सारे फाइंड आउट कर दे. ये आएगा -6 माइनस 10 10 10 4 एंड -2. राइट. ये दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. राइट. व्हाट वी हैव टू टेक एज पर द एजम्पशन. अभी ये ले लो y माइनस बी, y माइनस बी, y is this 130 minus b is 150. 130 minus 150 upon 1 comes -20. Right. Then second 150 minus 150 upon 1 comes 0 0. 150 माइनस 150 अपॉन 1 कम्स 0. इसी तरह से और सारे -20 -10 85 एंड -10. राइट. नाउ वी फाइंड आउट u स्क्वायर v स्क्वायर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू u एंड v. u स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ these values, v square means square of these values, uv means multiplication of u and v. So let's find out. Okay, now see I have solved the sum. u square मैंने गिन लिया है, v square that is calculated, uv calculated, total I have made and I have put up all the values into the formula. Right, formula में सारे वैल्यू put up करके simplify करके I have find out this r is equals to 0.67. right. Answer of correlation coefficient always lies between -1 to +1. It should not go beyond -1 to +1. If it is gone beyond that, that means your sum is wrong. Right. Okay. अब इसके नीचे after you find out this answer, write down one sentence below this. Always write down statement. Always make a habit of writing that statement that hence the correlation coefficient between age and blood pressure is 0.67. Right.
Okay, so this is how we can apply this shortcut formula, UV formula. Always sum में अगर if it is not specified the method, then if you see that large numbers of data are given, then always apply this shortcut formula, right? Okay, now let's take another sum. Sum number 7 that we have done, sum number 8th one is in homework. In this sum number 8, large number of data are given, right? That 95, 90, 75, 80, these are the large numbers, right? Here you can apply that UV method also, x minus x bar method also, and that xy method is also, that is also, right? So whatever you feel comfortable, you apply that method in this sum number 8. Now let's take sum number 9, because in this we can see 5 digits data are given, that means this is large data. So here obviously we apply that UV method. Now first of all, read the sum. Find the correlation coefficient between yearly per capita income and price index number of people of 6 different cities from the following data. तो ये पहले बेसिक वर्किंग लिख लेते हैं, राइट? एंड रिमेंबर दिस आर द 5 मार्क्स सम टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड. ये सेक्शन एफ जो होगा स्टैटिस्टिक में, उसमें से चैप्टर 2 में से ये 5 मार्क्स का, ये मेथड का, ये तीनों मेथड में से कोई एक मेथड का 5 मार्क्स का कंपल्सरी आएगा ही आएगा. सो ऑल दिस सम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स राइट डाउन द बेसिक वर्किंग. Okay, basic working I have written, x I have written, y written, u, v, u square, v square, uv. Now I have find out x bar and y bar, right? Okay, see y bar comes in this decimal value. Now first of all we assume u and v, उसका हम assume कर ले a and b. A means assume mean of x bar, B means assume mean of y bar. Now say 34,333 comes, right? Okay. Now let's ये मैंने mean find out कर लिया है. Let's now I will show you the another method that let's assume from this any of the value you can assume from this given data. You can assume the smaller data, smallest value also you can assume, and the nearer value of x bar, that also you can assume, right? Okay. Now of course whatever value you assume, your answer always remains same. Now in this 34,333, it's nearer to 30,000, so I have assumed here 30,000. Then for B I have assumed 180, this is 180. Mean y bar, that is 163.33, that is nearer to 180. 200 भी लेना है तो ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, 170 भी ले सकते हैं, right? आप any of the value you can assume. Or in the other way we can see that if we want to assume from this data, this is 30,000 that I have taken, and this is 180 I have taken. You can assume 100 also, 110 also, 220 also, 120 also, but I have assumed this according to the my assumption, right? Whatever you assume, your answer comes same as the given answer, right? Now let's start working. That x, that is 32,000, a 30,000, 32,000 minus 30,000 upon 1,000, so that comes 2. Working, we have to assume such a values that our working becomes more shorter. Now 29,000 minus 30,000 upon 1,000 comes minus 1. 40,000 minus 30,000 upon 1,000 comes 0, right? In this way we solve all the other remaining 3. That comes 6, this comes 0, this comes 9, total of this comes 26. Now we 120 minus 180 upon 10, this is 10, not 16, this is 10. Now from this Cx and Cy that is left to explain, we assume the common divisible of these given values. Now common divisible we can see that is 1,000, right? Because each data having 3 zeros, so common divisible becomes 1,000.
and here in this y common divisible becomes 10, right? Because at the end of each data we can see 0 0 0, so common divisible becomes 10. So Cx is equals to 1000 and Cy is equals to 10. So 120 minus 180 upon 10 comes minus 6. Then in the same way we solve remaining values. Minus 8, then 7, 0, minus 7 and 4. Total of this comes minus 10. Now we main important is u and v, right? Now we calculate u square, v square and uv. Square of this, that is u square. Square of this, that is v square. Multiplication of u and v, right? Okay. Working I have done u square, total of u square, v square, multiplication of uv and its total, right? Now I have written formula, put up all the values, then make simplification. ये minus minus, this 2 minus comes minus minus plus, so that's why this becomes plus. Simplify I have done, so r is equals to 0.99. this is lesser than 1, right? It should not exceed more than 1. Now after written this correlation coefficient, always write down statement that hence the correlation coefficient between the yearly per capita income and the price index obtained is 0.99, right? Whatever two variables are given, x and y, we have to write down that only in the form of statement, right? Okay. Now sum number 8 that I have given in homework, sum number 10 that do not in that decimal values are given, so that we will do tomorrow. In the sum number 11 also decimal values are given, that also we will do tomorrow. So I will let's give sums from the last exercise. Nah. Last exercise, exercise 2, section E. In the section E, sum number 1, then sum number 2. If data are not large, in that case you apply that xy method or x and x minus x bar method, and for larger data you apply that uv method. This is marks for HRM. Don't do this second one. First one, sum number 1, then sum number 4. 2 and 3rd are of that rank correlation, so don't do that, 2 and 3rd. Then sum number 5, 1 4 5. Bas, these 3 sums are in homework for today, right? Okay.